Got the feed with us. We will start question. You said a week ago at the World Cup that Pakistan would look to attack Australia, especially look to take on Nathan Lyon. Over the 4 days, Nathan Lyon went at 2.5 to 5 wickets. Pakistan scoring rate was fairly low. What went wrong in terms of what you expected and what actually happened? Well, surely we couldn't execute our skills well. We made the plans for the team, but unfortunately, as a team, we couldn't execute it well. There's no excuse for that, but surely, as a team, we couldn't execute our plans. And why do you think that was? I think obviously the guys wanted to, but they never applied themselves. To be very honest, as a team, there were a couple of tactical errors we made during this test match. There were certain situations where we can dominate, but as a team, as I said to you earlier, that the plans were there. We prepared ourselves for that, but execution wasn't great. Do you think that means that some of the plans that you wanted them to implement, the guys didn't quite follow when they were out in the field? Well, you can say that, but not really that much. I believe that everyone, the message is very clear. As I said to you earlier, like we prepare accordingly. In the last 20 days of my role, the message was very, very clear to everyone. And for sure, it might take some time, but gradually we will get up there where I feel like, this is the way to play international cricket at the moment. When you look back at the team selection, are you happy with how that happened? Are there any regrets with the team you put out? I believe the best at that moment we had, and that was on the side. I believe, to be very honest, we as a spinner we were not having anyone who was ready there. Abroad got injured. Noman was having a cut on his finger, so he was not been batting and not fielding from the last 10 days as he arrived here in Canberra. So he was also not ready to play that time. The only option we have to go with Aga that time, because we believe having the opposition have a 6 left-handed batsman, so he can play that role for us. So very much satisfied with the selection. 15 test defeats in a row in Australia over 24 years. A lot of people in Pakistan almost don't believe Pakistan can beat Australia here. Is there anything you can do or say to give the guys confidence or hope going into Melbourne? Well, to be honest, I said to you earlier, and that was I got that vibe from the preparation. I got it from the talent I seen during that preparation, the amount of talent these guys have. There's no doubt they can beat Australia here in Australia. But obviously, the execution wise, we couldn't do that. The plan was there. We prepared things accordingly, and I still believe as a team that Pakistan can beat Australia here in Australia. But obviously, as a team, we need to execute our skills whenever it requires. You mentioned the cut on the finger for Noman. What do you think? Nominally. Okay. What do you think his chances are of playing? Yeah, now he's getting better, because that cut, obviously he couldn't bat, he couldn't field for the 10 days as we arrived in Canberra. So now he's ready for the challenge coming ahead in Melbourne, and from here onward there are still 6-7 days. So we have some options where we can give a chance to the right guy. Yeah, and if he is fit and he can play, what sort of bonus would that be? How effective do you think he could be? Well, obviously not decided yet that he will have to play, but we have at least 2 options now, because the guy Sajid Khan arrived a day before here in Perth, so he was absolutely, because of the jet lag, wasn't ready again to take the test match straight away after a day arriving here. And Noman was, I believe, we have 2 options at the moment. Abrar is still, we are hoping that he might make it, but still his rehabilitation program is on, and medically we are testing him every second day. He's improving very well, but the options to have a spinner for the Melbourne Test will come into play as we reach out there, and still a week to go, and we will decide on the right information from the players. How will you use the game against Victoria in terms of preparations? What are the things, as far as execution, you're trying to get out of that match ahead of the test match? Well, surely there are a lot of positives in this game also. The 2 debutants, the way they bowled, the way they shown the passion to represent Pakistan, that is a very special and heartening to me. I really enjoyed personally the way they were presenting themselves for every challenge, and they are the most positive side we had during this test match. Unfortunately, our premier batsmen, our premier fast bowlers couldn't do well in this game, but this happened to anyone.
But I'm sure these guys will come harder and they will execute well in the next games. So the tour match next week at the Junction Oval, how are you going to use that to try and improve your execution? Well, that was something extra we added into the schedule because it wasn't earlier. Because we came here, we wanted to have more practice rather than only a one practice game where only that was a first class status. So we couldn't give all the batters, all the bowlers to have a feel. But that's the reason we wanted to have that practice game where more of the guys can feel the match scenario kind of a practice. And that will definitely plan accordingly. All the players should use that facility those 2 days to make themselves more familiar to the situations and the conditions. What did you think of the pitch? And I suppose, given your comments about the Canberra pitch, did you feel that left you unprepared for a pitch like this? No. Obviously, Canberra pitch was totally different. But this pitch, obviously, as you expect, the Perth, there will be a bounce, there will be a little bit lateral movement, and that was obviously we seen that during the last 4 days. But the amount of deterioration we witnessed, I wasn't expecting that much, because in the 4th day, the deterioration in the pitch was really high. But still, we believe it was a good toss to win for Australia. They managed to have that runs on the board, and then obviously batting in fourth and batting in 4th innings and 4th day and the 5th day is going to be a real challenge, and we couldn't do that, to be honest. भाई तीनों डिपार्टमेंट में पार्टी एक अच्छी बात यह है कि डेब्यू टाइम जो हमारे फास्ट बॉलर थे, स्पेशली अमर जमाल की बात करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा बॉलिंग की, लेकिन साथ साथ अगर सीनियर की बात करूं तो शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम अगर इस मैच में परफॉर्म करते तो हो सकता है कि थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता। तो सीनियर की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? देखें, ये होता है समटाइम, लाजमी नहीं कि सिर्फ सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने परफॉर्म करना है। पाकिस्तान की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस मैच में लगी वो ये थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सीज़न के परफॉर्मर थे, जब हमने उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की तो उन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी। आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, आज जितना उसके साथ साथ जितनी अच्छी बॉलिंग खुरम शहजाद ने की, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के, क्योंकि वो सीज़न के बेस्ट बॉलर थे। उन्होंने अर्न की ये प्लेस और आए, और यहाँ पे हमें भी उन्होंने इम्प्रेस किया। जिस तरह उन्होंने कैमरा में बॉलिंग की, जो पैशन था उनका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, वो बहुत मज़ा आया देख के। तो ये दोनों, आमिर जमाल और खुरम शहजाद का जो परफॉर्म करना है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतरीन साइन है। लेकिन ऑब्वियसली एज ए सीनियर, नॉट ओनली बाबर एंड शाहीन, सम ऑफ अदर सीनियर्स विच आई बिलीव दैट पाकिस्तान टेस्ट जो टीम है वो बहुत ही सॉलिड जोन में मौजूद है, जहाँ पे इन तमाम प्लेयर्स को अपने अपने रोल्स का पता है। बट एज ए बैटिंग यूनिट, एज ए सेड टू यू, कि हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। नथिंग रॉन्ग विद द टैलेंट। आई थिंक टेक्निकली और टैलेंट वाइज पाकिस्तान की टीम के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो हरा सकते हैं। सो आई एम श्योर दीज गाइज विल लर्न, और जो नेक्स्ट जो होंगे मैचेस उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज आएंगी। सरफराज जो है वो ग्लव्स के साथ और बैट के साथ कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। रिजवान हमने देखा है कि तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में उनकी अच्छा खेल पेश किया। तो अगले टेस्ट के लिए कुछ हो सकता है कि अगर कीपर नहीं तो एज ए बैटर उनको इंक्लूड किया जाए? देखें, तमाम ऑप्शन मौजूद थी और वो पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सरफराज क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। जो न्यूजीलैंड सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। ऑब्वियसली उसको 5-6 माह गुजर चुके हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जो आपका एक बेस्ट परफॉर्मर होता है पिछली सीरीज़ में, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरफराज का ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा एज ए सीनियर प्लेयर, या जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम किसी दूसरे के मुतालिक सोचना शुरू कर दें। जो रिजवान है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, और उनकी भी जो इंक्लूजन है टीम के अंदर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते। तो हम लोग जो भी, मैं और कप्तान और हमारी जो मैनेजमेंट है, जो भी हम मिल के नेक्स्ट जो है वो जो वेन्यू वहाँ पे जाके उनकी पिच देखेंगे और उसके मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होंगे उनको खिलाया जाएगा। भाई आपने अभी बात की सरफराज की कि एक टेस्ट मैच पे फैसला नहीं कर सकते आप। ज़ाहिर है आपको पता है सबसे बेहतर कि हर कंडीशन में, कराची की कंडीशन, पर्थ की कंडीशन में फ़र्क है। तो आपको ये नहीं लगता कि वो जो कंडीशन है उसकी जगह आप अगर कोर्सेज टाइप आप इवैल्यूएट करें कि अगर कराची में कोई सक्सेसफुल है तो शायद एक डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निकल स्किल्स चाहिए कि कोई यहाँ पर क्या मेथड में सक्सेस। लेकिन सरफराज को नया नहीं है इस सीरीज़ के लिए। सरफराज पहले ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हुए हैं, वो उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया के साउथ अफ्रीका में जाकर क्रिकेट खेली हुई है, इंग्लैंड में क्रिकेट खेली हुई है। तो वो कोई नए नहीं थे कि वो इसमें आप ये कहें कि शायद वो एडजस्ट नहीं कर सके,
यस इस मैच में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, एज ए बैट्समैन एंड एज ए कीपर शायद उनसे उस लेवल की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे वो नहीं परफॉर्मेंस हो सकी। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि किसी के भी स्किल्स के ऊपर डाउट करना कि वो सिर्फ एक लिमिटेड कंडीशन के लिए परफॉर्म कर सकता है, दैट इज़ नॉट राइट। और ये जो 2 डे वार्म अप गेम है जंक्शन ओवर, तो उसके लिए आपने कोई खास रिक्वेस्ट डाली? आपको कैनबरा की पिच पसंद नहीं आई कोई इतनी, तो किस किस्म की आप पिच चाह रहे हैं? देखिए ये तो ऑब्वियसली जो प्रोवाइडेड कंडीशन है वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के डोमेन में आता है। हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि हमें सिमिलर जो है वो कंडीशन मिले ताकि हमारे जो बैट्समैन और हमारे जो बॉलर हैं वो वेल यूटिलाइज़ कर सकें उस ऑप्शन को, क्योंकि ये पहले नहीं थी, एज ए सेट टू यू अर्लियर के पहले सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो आई वांटेड कि हमारे जो प्लेयर हैं वो जितने ज़्यादा कंडीशनल जो है एडजस्टमेंट करेंगे मैच सिनेरियो के अंदर वो ज़्यादा बेहतर फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान के लिए। तो बहुत शुक्रिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी कि उन्होंने हमें हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। हम मैक्सिमम पॉसिबल जो वे होगा उससे लर्न करने का, उसको यूटिलाइज़ करने का, उसको ज़रूर वो जो है यूटिलाइज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्या देखने के पाकिस्तान टीम कम्पीट करेगी? नहीं, हम लोग सिर्फ मैं पहले कह चुका हूँ, ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि कम्पीट करना इसका मतलब आप कभी जीतना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान टीम के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान टीम के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो हरा सकते हैं। तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ और पाकिस्तान की ये वाली टीम गो कि ये वाला हमारा फेलियर हुआ एज ए टीम, वी विल एक्सेप्ट दैट, वी विल लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन अगर आप टैलेंट की बात करें, अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो अवेलेबल हैं कि अगला मैच पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करे। दोनों जो आपके फास्ट बॉलर ने डेब्यू किया उसके मुतालिक क्या? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान के सिस्टम से आने वाले प्लेयरों ने अपना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी इस टेस्ट के अंदर। एक बोल्ड डिसीजन था हमारे लिए भी कि हम अपने यंगस्टर्स को 2 डेब्यूटेंट्स को पर्थ टेस्ट में खिलाएं, लेकिन जो रिस्पांस था, वो जो पैशन था, उसको देख के बहुत मज़ा आया। और यही चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब हम अपने प्लेयर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे, वो रिस्पांस करेंगे, उसका फेलियर और सक्सेस हमारे सामने आएगा। लेकिन जब तक हम प्रेजेंट नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटी, तब हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो सो फार आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की जो सक्सेस है इस पहले मैच में, वो बहुत शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस पैशन को और अपनी इस सोच को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने हार्डवर्क को और बढ़ाएंगे ताकि इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रहें। और स्पेशली खुर्रम शहजाद की अगर मैं बात करूँ, स्टीवन स्मिथ को जो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक हैं, उनको 2 मरतबा एक मैच में आउट करना इस स्पेशल थिंग, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। और खुर्रम शहजाद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, राइट एरिया में हिट किया। और आमिर जमाल ने जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर एक मुश्किल हालात के अंदर आके परफॉर्मेंस की, जो 6 आउट किए उन्होंने, वो बहुत ही शानदार था। नुमान अली अबरार के बारे में बताइएगा कि अगले मैच के लिए दस्तयाब होंगे? जी, मैंने आपको बताया कि जो अबरार हैं वो अभी भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं, उनकी मेडिकल असेसमेंट चल रही है, हर 2 या 3 दिन के बाद उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है। ही स्टिल नॉट 100% श्योर कि वो अगला मैच खेल सकेंगे, लेकिन उसका जो है दस्तयाबी के लिए वो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बेस करता है। और जो नुमान है वो अब ठीक हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी उनका जो कट था वो 10 दिन, जो मैंने आपको बात की कि 10 दिन से ना वो बैटिंग कर सके थे। जब वो कैमरा में आए पहले दिन उनको ये मसला आया, ना वो बैटिंग कर सके ना वो फील्डिंग कर सके, लेकिन अब उनकी वो तमाम सिचुएशन ठीक है और इंशाल्लाह विल बी अवेलेबल। आगे